गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम गति शक्ति। तो पीएम मोदी ने आपको बताया ना कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। तो ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज़, जिसमें कि रेलवेज़ और रोडवेज़ जो हमारी मिनिस्ट्री हैं वो भी इंक्लूडिंग है, वो इकट्ठे आकर जो है वो काम करेंगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अंडर वन अम्ब्रेला आपका ये प्रोग्राम होगा। इसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं होंगे, स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड जो है मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो गति शक्ति नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जा रहा है जिसमें सारे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक तरह से नज़र रखी जा सकेगी, कोऑर्डिनेशन किया जा सकेगा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जा सकेगी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जैसे क्या होगा कि रेलवेज़ मिनिस्ट्री ये देख सकती है कि रोडवेज़ मिनिस्ट्री कौन से प्लान लेके आई है, आगे उसका फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या वो कौन सी रोड बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से रेलवेज़ मिनिस्ट्री अपने डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे एक तरह से आपका हॉरिजॉन्टल भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है और सेंटर और स्टेट लेवल पर वर्टिकल कोऑर्डिनेशन भी हो पाएगा। ठीक है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंट्री में जो भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हों चाहे स्टेट लेवल पर हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो डाल दिया गया है, वो है पीएम गति शक्ति। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपके जो जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड क्लस्टर्स बनाए जाने हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स, ये सारे प्लान्स जो हैं ये भी जो है पीएम गति शक्ति के अंदर ही आ जाएंगे अब से। ठीक है, तो अब इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इसरो की जो है इमेजरी जो है उसका भी यूज़ किया जा रहा है और सारे जो है आपके प्रोग्राम्स इसके अंदर जो है वो एक तरह से कन्वर्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 6 पिलर्स हैं पीएम गति शक्ति प्लान के, इसको आप पढ़ना खुद। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब कि सारे की सारी मिनिस्ट्रीज़, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, वो सारे एक ही सेंट्रलाइज पोर्टल के अंदर जो है वो अब आ गए हैं। फिर प्रायोरिटाइजेशन, अब जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि डिपार्टमेंट जो है वो प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि हमारा कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो पहले होना चाहिए, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि इस टाइम पर कंट्री में कौन सी फील्ड में, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में जो है वो इस टाइम पर ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी प्रायोरिटाइज जो है वो कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, जो प्लान हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको हम उनमें जो अगर कोई क्रिटिकल गैप्स हैं, ठीक है, तो समझ लो कि जैसे कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी और आपका डिपार्टमेंट वो ये नज़र रख सकता है कि हमारी तरफ से तो ये प्लान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, समझ लो कोई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देख सकती है कि हमारी तरफ से तो प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, लेकिन रोडवेज़ मिनिस्ट्री का जो आपकी जो रोड वहाँ पर एयरपोर्ट तक आनी है या जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है उसके में यहाँ इस जगह पर प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्ट का जो आपका पूरा एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो है वो क्रिटिकल गैप्स अगर कोई आ रहे हैं तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट सिलोज में काम करती हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपने ही डोमेन में लगी हुई है, रेलवेज़ मिनिस्ट्री सिर्फ रेलवेज़ का देख रही है। जब ये सिंक्रोनाइजेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आपके जितने भी जो है ये गैप्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे और डिपार्टमेंट्स और आपकी मिनिस्ट्रीज़ और आपकी सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट ये सब आपस में सिंक्रोनाइज लेवल पर काम कर पाएंगी। ठीक है, फिर एनालिटिकल, आपका टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जा रहा है, जीआईएस बेस्ड प्लानिंग की जा रही है, तो बहुत सारा जो है एनालिटिकल टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर डायनामिक है, आपकी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कभी भी सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ करके जीआईएस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, अपने प्लानिंग कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने प्लान्स को और अपने प्रोजेक्ट्स को, और इवन कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं एक दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ या डिपार्टमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये 6 पिलर्स हैं। ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत, आपको ये जो 6 कीवर्ड्स हैं ये बहुत हेल्प करेंगे अगर आपको क्वेश्चन ऑफकोर्स पूछा ही जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीएम गति शक्ति प्लान। तो ये 6 टॉपिक्स जो है, जो 6 आपके कीवर्ड्स हैं, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस यही है पीएम गति शक्ति की कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन के लिए, सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए ये प्लान निकाला गया है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में इंश्योर करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है,
So now let us see this topic in English, PM Gati Shakti. So recently PM Modi has launched this Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity. So this Gati Shakti will be a digital portal which will bring 16 ministries, including of course railways and roadways, together for an integrated planning and coordination mechanism. Okay, so what will happen is that under a digital platform or an under one umbrella, most of the ministries who are involved in infrastructural planning at the central government as well as state governments, they will coordinate with each other. So like I was giving you an example that in case there is a plan to construct an airport, any ministry, the civil aviation ministry in this case, civil aviation ministry would be able to see that if there is any plan for the roadways ministry to have a national highway near that airport or a road near that airport, it can also see if there is well connected state government's plan or any future plan rather that they are planning to construct a road near that airport. Only then civil aviation ministry would be able to take a decision regarding that. Currently what is happening, these ministries, especially the central government ministries and state government ministries, they are working in silos. They have no proper coordination mechanism. But now after this PM Gati Shakti master plan, there will be a one-stop shop for all infrastructure related information and project monitoring. So they would be able to access all the data from this particular platform, and they would be able to coordinate with each other at the central government level or as well as the state government level. There would be both horizontal as well as vertical coordination. Okay, so what this means, vertical this horizontal coordination means departments or ministries of central government and departments of ministries of state governments, they are coordinating with each other respectively. In vertical distribution, central government is coordinating with state government and state government is coordinating with central government. Okay, so this is horizontal and vertical coordination. So even the economic zones like textile clusters, pharmaceutical clusters, etc., they would also be accommodated in this particular platform, and they will also become a part of it, so that their progress can also be monitored and their progress can also be integrated with this the overall infrastructure mechanism of the country. So the technology will also be utilized. ISRO imagery developed by BSAG and will be utilized for implementation of this particular scheme. There are 6 pillars of this PM Gati Shakti plan. Like I've told you earlier, that in case you are encountering a question in mains exam regarding this particular topic, then you can utilize these 6 keywords and this will fetch you good marks. The first one is comprehensiveness. You can see the scale of this program. All the central government machinery as well as the state government machinery is getting together to implement this particular plan. The prioritization, there will be cross-sectoral interactions between the different departments of both central and state governments, so they can prioritize which particular field of infrastructure needs our priority at this moment through coordination. So there will also be optimization. Any critical gaps in any infrastructure project or any infrastructure sector, they can be filled in using this particular Gati Shakti master plan platform, because they would be able to see that of course we are performing good. Civil aviation ministry would see that we have good plans for airports, but the state government does not have any concrete plan of making connecting roads to that, so they can fill those gaps by coordinating with the state governments. Okay, similarly there will be synchronization, so to facilitate coordination, both the vertical and horizontal coordination, that would be easy with this particular plan. Similarly, there will be analytical and dynamic planning and coordination because of the use of technology. You will be having a GIS map portal, and you will be having satellite imagery through which you can visualize the entire plan
You can review that the projects and monitor the progress of such cross-sectoral projects, because there is an extensive use of technology in this PM Gati Shakti master plan. Okay. So the significance is that the country will be able to have an integrated and seamless connectivity for not just the people of for not just the movement of people, but goods and services also. Okay, so it will usher in an era of new development, where the infrastructure of the of our economy would be at par with at least the developing countries. Okay. So now let us see the next topic, which is CRISP M टूल. तो यूनियन रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है उन्होंने क्लाइमेट रिजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल जो है वो लॉन्च किया है. आपकी वाटर शेड प्लानिंग के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है. तो अब आपका होगा क्या कि जो मनरेगा के अंदर आपके जो आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी आपका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो उसको क्लाइमेट रिजिलियंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, उसके लिए इस क्रिस्प एम टूल का जो है वो यूज़ किया जाएगा. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूके गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाया है. 7 स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान के स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा. GIS बेस्ड प्लानिंग की जाएगी, और इसके बेसिस पर जो प्रोजेक्ट्स, जो जैसे मनरेगा में आप सोच लो कि जो वाटर शेड मैनेजमेंट से रिलेटेड का जो भी प्लान आपका वो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसको आप क्लाइमेट रिजिलियंट कैसे बना सकते हो कि क्लाइमेट में अगर कोई चेंज होता है, आपकी वेदर में जो है चेंज होता है या डिज़ास्टर्स आते हैं, तो वो उनको विदस्टैंड कर सके, क्लाइमेट की वैगरीज को जो है वो विदस्टैंड कर सके. उसके बेसिस पर जो है ये आपका क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपका वाटर शेड प्लानिंग का जो आपका प्रोजेक्ट्स होंगे मनरेगा के अंदर जो बनते हैं वर्क्स में, वो उसको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने का ये पूरा एक टूल है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. CRISP M tool. So Union Rural Development and Panchayati Raj Ministry has launched this climate resilience information system and planning tool in collaboration with the UK government. So under this particular platform, watershed planning can be launched under the Mahatma Gandhi Narega program. So initially it will be launched in 7 states only, where the UK government has extensive presence. So in these 7 states, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan, there will be a GIS based plan, and any Manrega project which is related to watershed management, this will be ensured that such projects are climate resilient, so that the projects which will be made under this Manrega scheme, they will be climate resilient, and no climate related disaster or weather related vagaries will be able to harm them, or these projects will remain functional even after the climate related issues. Okay. So now let us see the next topic, which is International Energy Agency. तो IEA जो है उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है कि आप हमारे फुल टाइम मेंबर बन जाओ. तो हुआ क्या था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि 2017 में इंडिया ने एज एन एसोसिएट मेंबर जो है वो IEA को ज्वाइन किया था. अभी जनवरी में हमने पढ़ा था एक फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप IEA और इंडिया के बीच में साइन हुआ था. अब इंडिया को उन्होंने इससे नेक्स्ट स्टेप लॉजिकल स्टेप यही रह गया था कि IAA ने अब इंडिया को कहा है कि आप हमको फुल टाइम मेंबर बनकर ज्वाइन कर लो. ठीक है. तो अभी तक तो क्या है कि OECD के मेंबर्स ही इसके जो है वो मेंबर बनते हैं, पर 2015 से IEA जो है वो अपनी जितनी भी मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी मेंबर बनाने की ट्राई कर रहा है. तो न्यू दिल्ली जो है मतलब इंडिया ऑफ कोर्स, तो इंडिया को एक इसमें अगर आपको IEA का मेंबर बनना हो तो आपके पास एटलीस्ट 90 डेज़ की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की आपकी जो है वो आप एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. मतलब इंडिया को अगर इसका मेंबर बनना है तो उसके पास 90 डेज़ की जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होने चाहिए. मतलब कि अगर 90 डेज़ तक सप्लाई हमें ना आए तो हमने इतनी स्टोरेज अपनी कंट्री में बनाई होनी चाहिए ऑयल की कि हमारी जितनी अभी नीड्स हैं डेली की, उसके हिसाब से 90 दिन तक हमारे को अगर बाहर से सप्लाई ना आए तो हम अपने जो है वो 90 दिन तक हम अपना ऑयल की नीड्स को पूरा कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन करंटली इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सिर्फ 9.5 दिन के हैं. तो अगर इसको हम बढ़ा के 90 दिन करेंगे तभी हम IEA के मेंबर बन सकते हैं.
एक और ये भी कंडीशन है कि अपनी ऑयल की कंजम्पशन जो है उसको 10% हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आईईए का एक डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम है जो कि कहता है कि नेशनल ऑयल की जो कंजम्पशन है उसको 10% कम करो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस को मानना पड़ेगा, तभी इंडिया जो है वो आईईए का मेंबर बन पाएगा। तो आईईए जो है वो 1974 में बनाया गया था। तो हुआ क्या था कि गल्फ में जब वॉर हुई थी तो एक ऑयल क्राइसिस आया था। तो उन्होंने जो है आपके जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने कनाडा, यूएस जो है ऐसी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, उनको ऑयल नहीं दे रहे थे। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो बनाई गई उसके उसी टाइम के आसपास 1974 में। 1973 में वो क्राइसिस हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी जो है वो आपकी ये आईईए बनाई गई। ठीक है, तो ओईसीडी कंट्रीज़ इसीलिए इसकी जो सबसे ज़्यादा वो मेंबर्स हैं इस टाइम पे, ऑफ कोर्स ओईसीडी कंट्रीज़ ही मेंबर हैं इसकी। इसलिए करंटली इसके 30 मेंबर्स हैं, यहाँ पे गलती से 29 लिखा है, इसको आप एडिट कर देते हैं। तो ये 30 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। मैक्सिको जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जिसने 2018 में इसको ज्वाइन किया है। और ये एक एनर्जी पॉलिसी एडवाइज़र होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि एनर्जी पॉलिसी एडवाइस देती है मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, तो इसके 3 ई हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपका इसका मोटिव जो है आईईए का वो ये है कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जो है वो प्रमोशन करना, मतलब ऑयल से लोग जो है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को दूर हटा के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या फिर और एनर्जी पॉलिसीज़ में चेंज लाकर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जो है वो अपनी जो मेंबर कंट्रीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, सो क्या इंडिया कैसे ज्वाइन कर सकेगा इसको? तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तो सिर्फ ओईसीडी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी जो है वो मेंबर्स हैं। तो 2015 से आईईए ने क्या किया है कि जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनको वो अपने डोर ओपन कर रहा है कि आप हमको आकर ज्वाइन करो। तो 8 कंट्रीज़ को उन्होंने अपना एसोसिएट मेंबर बनाया था, जिसमें इंडिया भी ऑफ कोर्स इन्वॉल्व था। ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड के साथ जो है वो इंडिया को भी एसोसिएट मेंबरशिप मिली थी। लेकिन इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट ऑयल जो है वो कंजम्पशन वाला कंट्री है। तो आईईए जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि इंडिया को आउटसाइड ऑफ दिस इन्फ्लुएंस रखे, तो इंडिया को उसको मेंबर बनाना पड़ रहा है। तो इंडिया को अब अगर इंडिया जो है ये 2 कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो इंडिया जो है वो आईईए का फुल मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है बनना मेंबर या नहीं चाहती है, तो हम इसको देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, so now let us see this topic in English. International Energy Agency. So recently the oil minister, that is Hardeep Puri ji, he has confirmed that International Energy Agency has invited India to become the full-time member of International Energy Agency. So the background of this particular topic is that in March 2017 India became an associate member of this IEA. So its headquarters is located in Paris because it is located in OECD headquarters, that is in Paris. In January 2021, India also signed a framework for strategic partnership with IEA member countries. So now the next logical step was that IEA invites India to become a member of this particular group. So now it has done so. If India decides to join this IEA, it will have to fulfill 2 major conditions. The first one is it has to raise its strategic oil reserves to 90 days. Okay, so currently we have our strategic oil reserves of about 9.5 days, so it will be almost 10 times increase. We will have to increase our strategic oil reserves to almost 10 times. Okay, the second demand is that you have to reduce your national oil consumption by up to 10%. So if these 2 conditions are satisfied, India will be eligible to become a member of IEA. So just remember that currently there is this OECD member countries are already are the member states of this particular group. The recent country to join this IEA was Mexico, which joined in I think 2018. And this IEA was formed in 1974 as a response to the Gulf oil crisis, when the Gulf countries put oil embargo on Canada and US like countries, these Western countries, because there was a Gulf war where Israel was fighting against these Gulf countries, and the Western countries were supporting Israel.
So the Gulf countries put an oil embargo on such Western countries, and in response to that, this IEA was formed by the OECD countries. So it has 30 member countries now, not 29. Okay, and this IEA acts as an energy policy advisor to all the member countries. Okay, so it has 3 E's, which the mandate of agency is focused on 3 E's: energy security, economic development, and environment protection. So like I've told you that only OECD countries are currently the members of this organization, but since 2015 IEA is opening up its doors for all major emerging economies, and as India is the third largest consumer of oil, IEA cannot afford to avoid India anymore. That's why it has asked India to join as a full-time member. So now let us see the next topic, which is plastic waste recycling. तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक ड्राफ्ट रूल्स जो है वो सर्कुलेट किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. तो उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग जो मटेरियल जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग करते हैं उनको कहा है कि आपने 2024 तक अपना जो भी आपने प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है उसको कलेक्ट करना है और जितना हो सकता है उसको आपको रिसाइकल करना है. ठीक है, तो एक सिस्टम उन्होंने स्पेसिफाई किया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो अब आप सोचो, जैसे समझ लो कि कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उन्होंने प्लास्टिक जो है वो जनरेट किया है, तो अब वो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे. ठीक है, तो कलेक्ट ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने मोबाइल बनाया है उसी को ही जाके उनको कलेक्ट करना है. वो कोई भी मतलब प्लास्टिक को सोसाइटी में से कलेक्ट कर सकते हैं और उनको जो है उनका वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सकते हैं. ठीक है, और इन केस अगर वो नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो वो कोई और जैसे मैंने आपको बताया था ना कार्बन क्रेडिट्स होते हैं. ठीक है, वैसा ही कोई और कंपनी जिसने समझ लो कि जिसने 100 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया था प्लास्टिक, लेकिन उसने 150 मिलियन टन्स जो है वो कलेक्ट कर लिया है. ठीक है, तो ये जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे वो उनसे 50 मिलियन टन्स खरीद सकते हैं. तो ये सर्टिफिकेट्स वो जो है वो खरीद पाएंगी एक जो प्रोड्यूसर कंपनीज, और उसमें ट्रेड भी कर सकेंगी. ठीक है, तो अब ये एक आपको बताया गया है इसमें इस ड्राफ्ट में कि कौन कौन सी प्लास्टिक जो है उसको आपको रिसाइकल करना है, और जो प्लास्टिक जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जो कि जिसको डिस्पोज करना ही पड़ेगा, जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते, उसके लिए भी जो है वो आपको बताया गया है, गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे उसको जो है वो आपको डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे आपको उसको कौन से प्लास्टिक को आप रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो, कौन से आप प्लास्टिक को सीमेंट की आपके में यूज़ कर सकते हो, ऑयल बना सकते हो. तो ये सारी गाइडलाइंस भी जो है वो बताई गई हैं इसमें. ठीक है, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो ही जो है बताया करेगा आने वाले टाइम में कि कैसे जो है डिस्पोजल प्लास्टिक का किया जाएगा. ठीक है, सो प्लास्टिक जो है आपका 3 तरह का होता है. एक तो होता है रिजिड प्लास्टिक, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग. ठीक है, जिसमें सिंगल या मल्टी लेयर होता है. थर्ड कैटेगरी होता है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, जिसमें एटलीस्ट 1 लेयर जो है वो प्लास्टिक की होती है और एटलीस्ट दूसरी लेयर, एक और लेयर एटलीस्ट जो है वो किसी और सब्सटेंस की होती है, प्लास्टिक की नहीं होती है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग. So Environment Ministry has issued a draft rules which mandates the producers of plastic packaging material to collect all their produce by the year 2024 and ensure that a minimum percentage of it is recycled. So how they will ensure this? So like I was giving you an example. So just imagine that there is a mobile phone company and it has produced 100 million tons of plastic in the last few years. And it has the obligation under these new rules to collect all the plastic by the year 2024. So how they will do it? They don't need to go to their consumers and take back all the plastic. They can just take away the amount of plastic that they have produced in the last few years from the society through any other mode. Okay, so they can, so like in case they were producing single-use plastic, so they don't need to go to their consumers to collect that. They can collect the single-use plastic from the entire country, from the entire society, and they will earn this particular certificates. Okay,
and there will also be a system of extended producer responsibility certificates. So like I was giving you an example of carbon credits. So just imagine that a company has an obligation of collecting 100 million tons of plastic by the year 2024, but that company has managed to collect almost 150 million tons. So it has excess of 50 million tons which it can sell. Okay, and there is a company which was unable to collect 50 million tons. It fell generally short of 50 million tons of plastic which it produced in the last few years. So it can buy those certificates from the company which collected a surplus. Okay, so there will be a certificate which will be traded between them. So ultimately, the government wants, rather these we all want that plastic will be collected and it will be recycled or it will be processed accordingly say it will be processed so as to ensure that the environment remains safe. Okay, so in any way, if one company does it or the other company does it, it does not really matter which company does it, as long as the plastic is collected and processed safely. Okay, so there is also uh, a particular guidelines. There will be particular guidelines by Central Pollution Control Board as to how multi-layered and multi-material plastics which are not eligible for recycling, how they will have to be disposed of. If one kind of plastic is favorable for road construction, then it will be allowed to for road construction activities. If another plastic is better for cement kilns, then CPCB will issue guidelines as to how it will be sent to for cement manufacturing. Okay, so this CPCB will handle the issue of guidelines as to how these plastics waste will be handled. Okay, so there are three kinds of plastics. Like the first one is rigid plastic, the second one is flexible plastic, which has a single layer or multi-layer of plastic, and the third one is multi-layered plastic packaging, in which there is at least one layer of plastic and at least one layer of a non-plastic material. Okay, so now let us see the next topic, which is International Day of the Girl Child. तो 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन हम एडोलेसेंट गर्ल चिल्ड्रन की इंपॉर्टेंस को जो है वो रिकग्नाइज करते हैं. सबसे पहली बार जो है 2011 में रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है वो सेलिब्रेट किया करेंगे. इस साल का थीम आपका डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन जो है वो थीम है. इसी से रिलेटेड एक बीजिंग डेक्लेरेशन है जो कि 1995 में इशू की गई थी, जिसमें कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी विमेन के ऊपर बीजिंग में. तो उसमें सिर्फ विमेन से रिलेटेड ही नहीं बल्कि गर्ल्स से रिलेटेड जो उनके राइट्स के बारे में भी बात की गई थी. ठीक है, so now let us see this topic in English. International Day of the Girl Child. So every year we celebrate October 11 as the International Day of the Girl Child. So in 2011 there was a UNGA resolution regarding the same, where we recognize the importance of adolescent girl children. The theme of this year is digital generation, our generation, and there's a similar topic regarding Beijing Declaration, which was issued in 1995 when there was World Conference on Women in Beijing, and this was the first conference which talked about the rights of girl children and women, of course. Okay, so based upon that, we are celebrating this International Day of the Girl Child. We have rather celebrated this on 11th of October. So it was in news. That's why we've discussed it. Just remember that on prelims this year there was a question on International Day for Mother Language. So these days have also turned significant for your examination. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.